Good morning and assalamu alaikum students. Good morning everybody. Can you hear me all? Hurry up beta, kindly reply me. Walaikum salam beta Zayan. Okay, Visam, Zayan, boys and girls, can you hear me beta? Okay. Okay, class 10, if you remember, yesterday I had an internet problem and my internet was disconnected. So, because of this problem, we were unable to complete our lecture, and few of the sentences of present perfect tense were left. Okay, so that is why, because of this reason, I have included those sentences in my today's lecture so that we can complete them. Okay, I know that uh, your concept of English, the concept of translation of present perfect tense must be clear now. I have told you yesterday that present perfect tense, what is the identification, Urdu identification of present perfect tense is chuka hai, chuki hai. Okay, but sometimes we don't have chuka, chuki in the last of the sentence. So there is something else that can tell us that it's a present perfect tense. And what was that thing I have told you yesterday? So I have told you yesterday that instead of present chuka, chuki, we will have या है, ये है, ये है. For example, बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, या क्या बच्चे स्कूल चले गए हैं. ओके, या ये इज इक्वल टू चुका है, चुके हैं, चुकी है. So I hope I am clear to all of you that in most of the cases in present perfect tense you will have chuka hai, chuke hai, chuki hai. But maybe you have some sentences like this कि या है, ये है, ये है. So या है, ये है, ये है is equal to chuka, chuke, chuki. Don't get confused at all. This is also present perfect tense. So that is why I have included yesterday's sentences in today's lecture so that we can complete it today, inshallah. Uh, so, what was the last sentence that we have completed? Okay, just give me a few seconds to admit the students. They are joining the class. So, I think we have completed till here yesterday. डाकू ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा है? Yes, yes, Misha beta, I remember. Till sentence number 11 we have completed yesterday. And what was the translation of sentence number 11? It was like that, where have the robbers been robbed the rich man? Where have the robbers been robbed the rich man? Okay, now we are moving towards sentence number 12. And sentence number 12 is, तलबा कि आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है? आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है? Who is going to translate it? Very good. Why have you bought a ticket for me? Very good. इसी तरह पिछले सेंटेंस को अगर हम देखें 11th सेंटेंस को, where have the robbers robbed the rich man? Where have the robbers robbed the rich man? And number 12 is, why have you bought a ticket for me? Why have you bought a ticket for me? Okay, now तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं. तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं. How will you translate it, beta? Okay, देखे जा चुके हैं means check हो जाना. Okay, who is going to translate it? तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं.
And what kind of sentence is this? If you remember yesterday, I have told you these types of sentences also. Who is able to translate it? Hurry up, girls and boys. Nobody is replying. Girls, boys, are you getting me? ओके, तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं इज वेरी गुड निशा, वेरी गुड। बाय द स्टूडेंट्स नहीं आएगा बेटा। तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं का मतलब है कि पेपर्स जो है स्टूडेंट्स के दे आर चेक, और वो कभी भी यू आर नॉट required to mention here the doer of the action as well. Okay, this is a passive sentence, and action is being more emphasized in these kinds of passive sentences where we don't know the doer of the action. हमें ये तो नहीं पता कि उनके पर्चे देखे किसने हैं, हाँ हमें ये पता है कि वो देखे जा चुके हैं। ओके, ओके हरीम बेटा, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखे जा चुके हैं। तो हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट? The papers of the students have been checked. Okay, papers of the students have been checked. Okay, we are not supposed to mention the doer as well, because in Urdu sentence doer of the action is not mentioned here. यहाँ पे action करने वाला कौन है? It's not mentioned. Only the action is mentioned here. So these kinds of sentences are known as passive sentences where we are not supposed to mention the doer as well. So तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं. The papers of the students have been checked. Okay, papers of the students have been checked. Okay, next sentence, ये खबर अखबारात में शाया हो चुकी है. Again we have passive sentences. We don't know the doer of this action, we only know the action. ये खबर अखबार में शाया हो चुकी है. This news has been published in the newspaper. Okay, this news has been published in the newspaper. Very good, Maham and Amna. Very good, beta. Okay, now the last one. क्या शेर पिंजरे में बंद किया जा चुका है? Again we have passive sentences. We don't know the doer of the action. क्या शेर पिंजरे में बंद किया जा चुका है? Who is going to translate it? Has the lion been encaged? Encaged. 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 Has the lion been encaged? Okay. So this was all about yesterday's lecture. Few of the sentences were left because of my bad internet connection, poor internet connection. So that is why I have included the remaining sentences in today's class as well. So now we are moving towards our today's lecture. Okay, let's move from the start. Let's take a start. Today we have lecture number 25. Today we have lecture number 25 and date is 13th of August 2020. And what I have included in today's lecture, in my today's lecture, I have included translation of present perfect continuous tense. Okay, class 10, now we are doing the translations of these tenses individually. I have included every tense so that it will become more easier for you to understand, to identify the tense through its Urdu identification and then to translate it. बेटा अब मुझे इन टेंसेस की ट्रांसलेशंस के बाद किसी बच्चे से ये कमेंट सुनने को ये ना मिले कि टीचर आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि which tense is this, because we are doing the translations of these tenses individually one by one. I have included these tenses. First of all, we did present indefinite tense. Then in yesterday's class, we did present continuous and present perfect. And now in today's class, I have only included present perfect continuous tense. So please, अब मुझे किसी से भी ये सुनने को ना मिले कि we don't like we are unable to identify the tense. I have told you yesterday that if you are able
to grab the concept of first four tenses. अगर आप पहले चार टेंसेस जो प्रेजेंट के टेंसेस हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, उनकी ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, उनकी उर्दू आइडेंटिफिकेशंस को याद कर लेंगे, आई कैन बेट that upcoming eight tenses will be automatically understood by you people. Only the basic thing is that you have to understand first four tenses. After grabbing the concept of first four tenses, the next eight tenses will automatically be understood by you people. That is why I am repeating again and again कि इन चार टेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, सुन लें, समझ लें. What was the Urdu identification of present indefinite tense? It was ta hai, te hai, ti hai. What was the Urdu identification of present continuous tense? It was raha hai, rahe hai, rahi hai. What was the Urdu identification of present perfect tense? It was chuka hai, chuke hai, chuki hai. Or other than chuka, chuke, chuki, we will have ya hai, ye hai, ye hai. Now we have present perfect continuous tense and we have to know what is the Urdu identification of present perfect continuous tense. Okay. Now, रहा है, रहे हैं, रही है, but with time duration. क्लास 10 प्लीज इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू आइडेंटिफिकेशन भी रहा, रहे, रही है. बट इन दिस केस इफ रहा, रहे, रही के साथ हमारे पास टाइम ड्यूरेशन भी मौजूद है तो ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. मैं किताब पढ़ रहा हूँ, दिस इज सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्योंकि इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन, टाइम लिमिट हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक्शन हो रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक. लेकिन अगर वही सेंटेंस हमारे पास टाइम पीरियड के साथ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये बन गया है present perfect continuous tense. I have been reading a book since morning. Please better try to understand this concept, this difference between present continuous tense and present perfect continuous tense. In both of the cases, we have raha, rahe, rahi. But in continuous tense, we will only have raha, rahe, rahi. But in present perfect continuous tense, we will have time period along with raha, rahe, rahi. Okay, I hope this difference is clear to all of you. Now let's start reading present perfect continuous tense. इस टेंस में we will have has been or has been. With he, she, it we will have has been, and with we, they, and you we will have been. Okay, we will only have to use first form of verb plus ing and now use of since and for. Okay, use of since or for is must now in present perfect continuous tense. For example, मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ. I have been reading this book since morning. डॉक्टर एक हफ्ते से मरीज का इलाज कर रहा है. The doctor has been treating the patient for a week. हम यकम मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं. We have been taking the examination since 1st March, or you can write 1st of March. मैं 1962 से इस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ. I have पढ़ाता रहा हूँगा. I have been teaching in this school since 1962. रज़ा साहब कई साल से यहाँ रहते हैं. Mr. Raza has been living here for many years. Okay, now beta in present perfect continuous tense with he, she, and it, we have to use has been, first form of verb plus ing. With I, we, you, and they, we have to use have been plus first form of verb plus ing. And with time duration, we have to use
since and for. Okay, now you have to understand the concept of since and for. You have to understand where you are supposed to use since and where you are supposed to use for. Okay, how we are going to use since and for? First of all, see the use of since refers to a specific point in the past. अच्छा, since वहाँ यूज होता है जब हमारे पास point of that action is mentioned. You can take like this, starting point of any action. For example, मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ. When did that action started? It action started since morning, सुबह से. अब हमें उस सुबह के टाइम का नहीं पता. 9 बजे से, 7 बजे से, 10 बजे से, we don't know the time. We only know the starting point of that action, where we know the starting point, the specific point of that action. We always use since. Okay, where we know the starting point of any action, we always use since over there. Number two, it always used with the perfect tenses. Keep it in your mind that since is always used with perfect tenses, either present perfect, past perfect, or future perfect. But if we know the starting point of any action, we always use we always are supposed to use since. Okay, next is we always go back to the beginning. Since को इस्तेमाल करने के लिए हमें हमेशा beginning की तरफ जाना होगा. Beginning of that action. मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ. किताब पढ़ने का एक्शन स्टार्ट कब से हुआ? सुबह से. So we have to move back towards the beginning. Okay. For example, हम यकम मार्च से इम्तिहान दे रहे हैं. अब वी नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एक्शन कि इम्तिहान देने का जो अमल है वो स्टार्ट कब हुआ? वो यकम मार्च से हुआ. अब वो इम्तिहान देते हुए हमें कितना टाइम हो गया? 4 महीने हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए. वी डोंट नो. वी ओनली नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एक्शन. तो हम लिखेंगे कि वी हैव बीन टेकिंग द एग्जामिनेशन सिंस 1 मार्च. तो हमें सिंस का इस्तेमाल करने के लिए बिगनिंग की तरफ जाना होता है. हमें ये देखना होता है कि वो एक्शन शुरू कब से हुआ. वी हैव टू चेक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट एक्शन. हमें ये नहीं पता कि उस एक्शन को कंटिन्यू हुए हुए कितना टाइम हो गया है. वी डोंट नो द ड्यूरेशन. वी ओनली नो द बिगनिंग पॉइंट ऑफ दैट एक्शन, starting point of that action. Okay, for example, I have known about this job since January. यानी कि जनवरी से मैं इस नौकरी के मुतालिक इल्म रखता हूँ या जानता हूँ. मैं इस नौकरी के बारे में जनवरी से जानता हूँ. यानी कि what is the starting point of that action of knowing this about this job is January. अब वो जनवरी से लेके अब तक उस नौकरी के बारे में जानते हुए कितना टाइम हो गया? वी डोंट नो एट ऑल. हमें सिर्फ उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि जनवरी से वो इस नौकरी के बारे में जानता है. दिस इज ऑल अबाउट यूज ऑफ सिंस. हमेशा अपने दिमाग में रखें, सिंस वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमें उस एक्शन के बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, लेकिन हमें उसका ड्यूरेशन नहीं पता. 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 10 दिन हो गए, 2 घंटे हो गए. वी डोंट नो एट ऑल. वी ओनली नो अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट एक्शन. देयर वी आर सपोज टू यूज सिंस. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स फॉर. कि फॉर हमें कहाँ इस्तेमाल करना है? It is always about specific periods of time. For example, days, hours, months, etc. जब हमें उस एक्शन के स्पेसिफिक पीरियड या ड्यूरेशन का पता हो कि उस काम को शुरू हुए हुए कितना अरसा हो गया, 6 महीने हो गए, 6 दिन हो गए, 6 साल हो गए, 6 घंटे हो गए, तो जहाँ पर दिन, घंटे और महीनों का जिक्र न किया जाए, there we are supposed to use for. एक सिंपल सी टिप है, अपने जहन में रखिए, जहां हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा वहां हमने सिंस यूज करना है.
जब हमें उसका ड्यूरेशन पता होगा कि उस काम को, उस एक्शन को करते हुए कितना अरसा हो गया है, there we are supposed to use for. Okay, it can be used with other verb tenses including the future as well. अच्छा, since का तो मैंने आपको बताया कि हमेशा हम प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज करते हैं. either it's present perfect, it's past perfect or future perfect, there we are supposed to use since. but for के बारे में ये है कि ये अदर टेंसेस के साथ भी यूज किया जा सकता है, इंक्लूडिंग फ्यूचर एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन अबाउट दिस जॉब फॉर 6 weeks. मुझे इस नौकरी के बारे में इल्म रखते हुए 6 हफ्ते हो गए हैं. यानी कि मैं 6 हफ्तों से इस नौकरी के बारे में इल्म रखता हूँ या जानता हूँ. सो फॉर को हम और टेंसेस के साथ भी यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्यूचर एज वेल. जबकि सिंस हमेशा परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज होता है. हमेशा अपने जहन में रखिए, सिंस का इस्तेमाल वहाँ होगा जहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट एक्शन का मालूम होगा. इसके लिए हमें बिगनिंग की तरफ जाना होगा कि व्हेन डिड दैट एक्शन स्टार्ट. बट फॉर के लिए वी नो द स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्शन, specific period of time about that action, days, hours और months. कितने दिन हो गए, कितने घंटे हो गए, कितने महीने हो गए, ये हमें जानने के लिए इस्तेमाल करना होता है for. Okay, now kindly tell me in the chat box, is concept of since and for clear? Is concept of since and for clear to all of you? Okay, so now we are moving towards the translation of present perfect continuous tense. What will be the translation of present perfect continuous tense? And you people are going to translate it. I am not going to tell you, because I have tell you what is the structure of this tense. I have told you when you are supposed to use since and when you are supposed to use for. So we are moving towards the translation now. One by one, everybody will translate it, whoever is knowing the translation of the particular subject. Okay, let's start it now. मैं सुबह से ये नज़म याद कर रहा हूँ. कौन है जिसने एम का यूज किया बेटा? निशा. निशा बेटा, it's not present continuous tense, it's present perfect continuous tense beta. I have been learning this poem since morning. Very good. उमर, फायजा, आमना, हुरिया, बेटा आप भी अपने आप को, अपने सेंटेंस को ठीक कीजिए. इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस. सो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कि नज़म याद करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सुबह से है. नाउ वी डोंट नो कि उस नज़म को याद करते हुए हमें कितना टाइम हो चुका है. वी ओनली नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एक्शन, दैट इज सिंस मॉर्निंग. सुबह, मैं ये नज़म सुबह से याद कर रहा हूँ. नो प्रॉब्लम निशा बेटा. आई हैव बीन लर्निंग दिस पोम सिंस मॉर्निंग. ओके, नंबर 2. तलबा दोपहर से आराम कर रहे हैं. तलबा सुबह से आराम कर रहे हैं. तलबा सुबह से आराम कर रहे हैं. यस, फौजिया यू आर ऑल्सो राइट एंड निशा यू आर ऑल्सो राइट. हम रेस्ट को भी एज अ वर्ब ले सकते हैं, रेस्टिंग के तौर पे. ओके, द स्टूडेंट्स हैव बीन टेकिंग रेस्ट सिंस noon. Since noon, because it's दोपहर. Since noon. Okay, morning नहीं है बेटा, दोपहर है. Since noon. The students have been resting since noon, or the students have been taking rest since noon. Okay, हम 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं. Yes. अच्छा, 1 घंटा है तो ऑब्वियसली आप 1 आवर के बजाय फॉर एन आवर लिख सकते हो. ओके, वी हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस, सॉरी, फॉर एन आवर. ओके, वी हैव बीन रीडिंग the newspaper
for an hour. Okay. वो 2 साल से इस मदरसे में पढ़ रहा है. वो 2 साल से इस मदरसे में पढ़ रहा है. यस, मदरसा को आप मदरसा एज इट इज इंग्लिश में भी लिख सकते हो, या आप इंस्टीट्यूशन भी लिख सकते हो, कुछ भी. मदरसा एज इट इज यू कैन राइट. इवन यू कैन राइट मदरसा एज स्कूल एज वेल. ओके, बेसिकली स्कूल को भी समटाइम मदरसा कह सकते हैं to some extent. Okay, he has been studying in this madrasa for 2 years. Very good, everybody. He has been studying in this madrasa for 2 years. Okay, ये नौकर कई सालों से यहाँ काम कर रहा है. ये नौकर कई सालों से यहाँ काम कर रहा है. This servant has been, Faiza, servant is singular beta. This servant has been working here for many years. Very good, Huria. Yes, very good, Asra. Huria, very good, beta. This servant has been working here for many years. Okay. मुसाफिर आधे घंटे से गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं. मुसाफिर आधा घंटे से गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं. Okay, yes, you can write train as well. Normally if you remember this thing कि हम लोग गाड़ी को इंग्लिश में ट्रेन का भी लिख सकते हैं. Like the passengers have been waiting for train for half an hour. Okay, Unzila, no problem, beta. Yesterday I was also facing the same problem. Poor internet connection. Sorry to say, as we all are living in Pakistan and we are bound to face these kinds of problems. So no problem if you have joined my class late. You can take help from my recorded lecture, which I am going to upload on Google Classroom after my lecture. Okay. So the passengers have been waiting for the train for half an hour. Okay. वो 2000 से इस स्कूल में पढ़ रहा है. Nabil, it will be beta. He has been studying in this school since 2000. He has been studying in this school since 2000. Acha, अब now Fauziya, there is no need to mention years here. Since 2000. इस तरह तो आपके सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा कि वो 2000 सालों से स्कूल में पढ़ रहा है, which is quite impossible. Okay, so you have to mention the year. year 2000 से वो स्कूल में पढ़ रहा है. He has been studying in this school since the year 2000 आप लिख लीजिए, या since 2000 आप लिख लीजिए. Okay, क्या वो 2 घंटों से सो नहीं रहा है? क्या वो 2 घंटों से सो नहीं रहा है? Very good, Huria. Very good, girls. Has he not been sleeping for 2 hours? Okay, Nabil, beta, what are you doing? You are giving wrong answers. Beta, we are doing present perfect continuous tense. So here we are supposed to use has, been, first form of verb, and ing. Has he not been sleeping for 2 hours? Has he not been sleeping for 2 hours? And question mark. Beta, you people are habitual of not using question marks in interrogative sentences. These question marks carry 0.5 marks. If you will not use these question marks, your 0.5 marks will be deducted. Even I'm talking about in reference of your classwork, your assignments as well. If you will not use question marks in your homework assignment, your 0.5 marks will be deducted.
So please be very careful about the punctuation marks in the translations as well. Okay, let's move forward now. क्या सुबह से ओले पड़ रहे हैं? क्या सुबह से ओले पड़ रहे हैं? Who is going to translate it? ओले पढ़ना हेलिंग, HAILING, हेलिंग, HAILING, हेलिंग. Who can translate it, class? Yes, very good. Harim, has it been hailing since morning? Has it been hailing since morning? And question mark. Okay. Now we have next sentence. तलबा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे. Yes. The students have not been coming to school for 2 days. Students have not been coming to school for 2 days. Students have not been coming to school for 2 days. Yes, very good girls, boys. Okay, next sentence. क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे हो? क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे हो? Yes. अच्छा. You can take exercise as a verb as well. For example, taking exercise की जगह you can write exercising. तो exercise को भी as a verb आप use कर सकते हो in the form of exercising. Have you been exercising since morning? Yeah. Have you been taking exercise since morning? Okay. So next sentence is लड़की 2 बजे से रो रही है. लड़की 2 बजे से रो रही है. Who is going to translate it? Yes. अच्छा, अब फौजिया अगर आप यहाँ पे 2 PM और AM मेंशन करेंगी तो इसका मतलब तो ये होगा कि सुबह के 2 या शाम के 2, रात के 2, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है. सिंपल टाइम मेंशन है तो 2 o'clock is the right answer. The girl has been crying since 2 o'clock. The girl has been crying since 2 o'clock. Okay? The girl has been crying since 2 o'clock. अच्छा, जिन्होंने weeping लिखा है that is also fine. That is also fine. Since 2 o'clock there is no need to mention here AM or PM. क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है कि सुबह के 2 बजे से रो रही है या शाम रात के 2 बजे से रो रही है. सिर्फ 2 बजे टाइम मेंशन है तो 2 o'clock. ओके. क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है? क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है? Who can translate it? अच्छा, has the crowd been raising the slogans since noon? Has the crowd been raising the slogans since noon? Slogans means SLOGANS. SLOGANS. Has crowd been raising the slogans since noon? Has crowd been raising the slogans since noon? Is it clear? Yes. Okay. तालाब में मेंढक शाम से नहीं टर्रा रहे हैं. अच्छा, टरा is kind of a typical sound
जो ये जो है हमारे पास फ्रॉग्स की जो एक टिपिकल साउंड होती है, जो ये प्रोड्यूस करते हैं, काइंड ऑफ अ टिपिकल साउंड. इन उर्दू वी से देम tarana, and in English it means croaking. 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 इसको कौन ट्रांसलेट करेगा? तालाब में मेंढक शाम से नहीं टरा रहे हैं. The frogs have not been croaking in the pond since evening. Frogs have not been croaking in the pond since evening. The frogs have not been croaking. Beta, not croaking, Faiza. It's Croaking. 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 Faiza, please correct yourself. It's croaking. C R C. C means C for cat. Croaking. Croaking. The frogs have not been croaking in the pond since morning. Yes, it's croaking, Faiza. Now you are right. Okay. क्या पाकिस्तान 1986 से तरक्की कर रहा है? Has Pakistan been progressing? Okay. Has Pakistan been progressing since 1986? Has Pakistan been progressing since 1986? Okay, this was all about the translation of present perfect continuous tense. The basic concept is the use of since and for. एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ, अपने जहन में रखिए. since हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं where we have starting point of any action, और for वहाँ इस्तेमाल होता है where we have a duration of that action in the form of days, in the form of hours, in the form of months. 2 महीने, 2 घंटे, 2 साल. ठीक है, जहां हमारे पास नंबर मेंशन हो. 6 महीने, 6 दिन, 6 साल, 6 घंटे. देयर वी आर सपोज टू यूज फॉर. और फॉर एक ऐसा आप कह सकते हो कि प्रेपोजिशन है जो परफेक्ट के अलावा बाकी टेंसेस के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, इवन फ्यूचर एज वेल. जबकि इफ वी टॉक अबाउट सिंस इज यूज्ड वेयर वी नो स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट एक्शन, और ये हमेशा परफेक्ट टेंसेस के साथ ही इस्तेमाल होता है. इसके लिए हमेशा हमें बिगनिंग में ही जाना पड़ता है, स्टार्टिंग पॉइंट ही उस एक्शन का देखना पड़ता है. So what is the structure of present perfect continuous tense? It's he, she, it के साथ has been plus V1 and first form ing, first form of verb and ing. जबकि I, we, you and they के साथ have been, first form of verb and ing. I hope today's lecture is clear to all of you. Is there any confusion? You can ask me, beta. Okay, I hope everybody has written that attendance also. Okay, today you have a quiz as well. Quiz of the Vice Caliph. After my lecture, I am going to upload your quiz also. Today you have a quiz of the Vice Caliph. So till my next lecture, take very good care of yourself. Stay home, stay safe. Thank you and Allah Hafiz.